Hello and welcome to Prowings CS. How you all are doing? I'm also doing great. So CSEET के students, congratulations अगर आपका result अच्छा आया and Prowings CS आ गया है June 2021 के admissions के साथ. So do take your admissions and don't miss this opportunity. Batch 3rd of December से start होने वाला है. ओके जो भी पर्सन कांटेक्ट करना चाहे कांटेक्ट की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही है. इट्स वेरी सिंपल. इट्स 8283848516. आप प्रोविंस सीएस पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड 3rd दिसंबर से बैच शुरू हो रहे हैं तो प्लीज बी इन टच. ओके क्लियर एवरीवन. ओके तो अब देखते हैं आगे के टेस्ट पेपर्स का सॉल्यूशन. इस बार हमने जो टेस्ट पेपर लिया था वो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का टेस्ट पेपर शुरू किया है. तो सेटिंग अप टेस्ट पेपर्स में 1 to 6 चैप्टर्स कवर किए थे. स्टूडेंट्स ने पेपर दिया. जो ऑनलाइन देखना चाहता है टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी है, डाउनलोड करो देख लो. डिस्क्रिप्शन पे लिंक सब दिया गया है. बाय द वे कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमको लिंक क्लिक होके नहीं मिल रहा. आप टेलीग्राम जाके प्रोविंग सीएस टाइप करो, आपको डेफिनेटली लिंक मिल जाएगा. ओके सो इट्स वेरी सिंपल. सर्च करते ही आपको मिल जाता है. इट्स वेरी यूनिक नेम. चलो लेट्स सी द पेपर्स. सो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि विश्वास हैज पास्ड एमबीए फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट. He wants to become an entrepreneur, but he is confused in choosing the form of business or ownership. Advise Vishwas as to the aspects which he should consider before deciding the form of ownership. अच्छा वो कंफ्यूज है, उसको कौन सी ओनरशिप फॉर्म लेनी चाहिए, मतलब ही शुड बी टेकिंग दिस ओनरशिप और दैट ओनरशिप, क्या करना चाहिए. तो ऐसे सिचुएशन में आप मिस्टर विश्वास को एक गाइडिंग प्रिंसिपल देते हो, एक गाइड करते हो कि ओके आपको ये करना चाहिए कि वो. लेट्स राइट द आंसर. बिकॉज अब कंफ्यूज है तो उसको थोड़ा सजेशन तो देना पड़ेगा. अब हमें याद है कि चैप्टर में काफी सारे फॉर्म्स पढ़े थे. तो फर्स्ट हम लोग कुछ सजेशन देंगे. तो फर्स्ट डिसीजन, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन इज फेस्ड बाय द एंटरप्रेन्योर इज how the business should be structured. So that is the first confusion, that how the business has to be structured. फिर हम लिखते हैं that all the business must adopt some legal configuration that defines the rights and liability of the participant in the business ownership, control, personal liability, lifespan, financial structure. तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स है जो आपको देखने चाहिए कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है कि नहीं. वो स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी सूटेबल. एक एंटरप्रेन्योर को ये चीज सोच के डिसाइड करनी चाहिए. दिस डिसीजन विल हैव अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन सो एज टू सिलेक्ट फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ द राइट फॉर हिम. तो ये इम्प्लीकेशन आता है कि क्या ओनरशिप, क्या राइट्स उसको सिलेक्ट करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए. ओके सो इन मेकिंग द चॉइस इन आवर केस मिस्टर विश्वास शुड टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग्स. तो क्या क्या चीजें, एक उसका विजन क्या होगा, क्या सोच रहा है. His vision regarding the size and the nature of the business. He wants a small business, big business, mid-sized business, long-sized business. क्या सोच रहा है. एंड द लेवल ऑफ कंट्रोल दैट ही वांट्स टू हैव इन द बिजनेस. कभी कभी होता है मैं सोल प्रोप्राइटर, सब कुछ मैं करूंगा. कोई जन होते हैं जो डेलीगेट करना पसंद करते हैं. देन द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर दैट ही इज विलिंग टू डील विद. कई लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बहुत इजीली डील कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते. देन द बिजनेस वल्नरेबिलिटी ऑफ द लिटिगेशन दैट ही कैन हैंडल. खुद पे करेगा या कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस इज अ बेटर. And the tax implication of different form of organization that is based on the expected profit that he will be facing, and whether or not he will be ready to reinvest the earnings into the business, and his need for access to cash out of the business for himself. तो कितना पैसा वो खुद लेके जाना चाहता है, कितना पैसा वो बिजनेस में डलवाना चाहता है, वो सब उसके खुद के नीड्स के हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है. ओके सो दैट वाज अ वे यू कुड हैव आंसर दैट क्वेश्चन. इजी था, सिंपल था और सूटेबल था. काफी बच्चों ने अच्छे से आंसर किया. चलो लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा था मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्टूडेंट्स वुड बी कमिंग अप विद लॉट ऑफ गुड 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 पॉइंट्स. ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मतलब ऐसे देखा गया कि स्ट्रक्चर करते समय कई चीजों का मिस आउट कर दिया. बट ठीक है, आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहे हो, यही जान के आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. So let's see features of the business of the private limited company क्या क्या है. Private limited company का feature ये for business raising, fast growing business that will require the funding from the venture capitalists need to register as a private limited. तो अगर आपको बड़ा कैपिटल चाहिए तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए. This is because only the private limited company can make them shareholders and offer them a seat on the board of the directors. बराबर, क्योंकि या तो आप पब्लिक हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो ही आप उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बुला सकते हो. LLP should require the investors to be partners and OPC cannot accommodate additional shareholders. ये दोनों की डीमैरिज के सामने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेटर होती है.
दूसरा आता है लिमिटेड लाइबिलिटी. बिजनेस ऑफन नीड टू बोरो द मनी एंड इन स्ट्रक्चर जनरल पार्टनरशिप पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर ऑल द काइंड ऑफ डेट्स. ये देखा गया है. It cannot be repaid by the business and the partners would have to sell their personal possession to do so. In a private limited company, only the amount invested starting in the business would be lost and the director's personal liability would be safe. तो ये आप एक तरह से कंपैरिजन करते हुए बता रहे हो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों एक बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है और वहां पर उसके फीचर्स यूनिकली हाईलाइट करते जा रहे हो. Secondly would be the startup cost. Fee for filing SPICE, MOA, AOA has been reduced to zero for the proposed companies which are authorized with a paid-up capital of 15 lakhs and have a share capital or where the number of members are up to 20 in the case of a company not having share capital. तो फीस में ड्रामेटिकली रिडक्शन आया. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे आप इजीली कंपनी स्टार्ट कर सकते हो. Then the greater compliance. In exchange of the convenience of easily accommodating a funding company, the private company needs to meet the compliance under the various Companies Act. These range of statutory audit, annual filings with ROC, annual submission of IT returns, as well as quarterly board meetings, filing of minutes. तो प्राइवेट लिमिटेड में काफी सारे कंप्लायंस बेस्ड रिक्वायरमेंट्स आते हैं. ये भी आपको हाईलाइट करना चाहिए था. देन दोज फीचर्स आर आल्सो वन ऑफ द फीचर्स जहाँ पे इंफॉर्मेशन फाइलिंग, आरओसी फाइलिंग, इन आईटी दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, वो सब भी आते हैं. Then tax advantage. Private limited companies assume to have many tax advantage, but not actually the case. There are some segment of specific and industry specific advantage, but taxes are to be paid on the flat profits. So tax advantage बोलने के लिए तो है, लेकिन actually वो specific industry based tax advantage है. Otherwise that is not the case. और यहाँ पे भी tax flat profits पे आता ही आता है. तो as such it has to be tax compliant company. ठीक है? Fine. So that was the way we could have answered 1B. It was simple answer. The way कहाँ पे स्टूडेंट्स चूक गए. स्टूडेंट्स अपने आप से फीचर डिस्कस करने के बजाय पे प्राइवेट कंपनी के बारे में, दैट इज उसके अंदर इतने मेंबर्स होना चाहिए, कैन नॉट इनवाइट डिपॉजिट्स वगैरह, उसके ऊपर चले गए. जबकि ये क्वेश्चन बिजनेस के सेंस में था कि बिजनेस सेंस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों प्रेफर करनी चाहिए. ठीक है, फाइन. इसलिए मैं बोल रहा था कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन को समझते हुए. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Raghavi and her 6 more relatives and the friends wants to incorporate a needy company. They seek your advice on the following of the issues. तो एक needy company बनाना चाहते हैं राघवी और उसके relatives के साथ. वो आपसे पूछ रहे हैं whether needy company can be formed as a private company. Is there any specific law for the needy company? Interesting question. So क्या needy company as a private company form कर सकते हैं? तो हम लोग एक एक करके आंसर देते हैं. The answer is no. As per Rule 4 of the Needy Company Rules, Needy Company has to be incorporated under the Companies Act, shall be a public company. आपने बता दिया, it has to be a public company and shall have the minimum paid up equity capital of 5 lakhs. And these needy company has to comply with 2 sets of norms. One is Public Company Limited and another is the Needy Company Rules. So needy company has to be a public company and it has to comply with the Companies Act as well as Needy Company Rules. तो इसका दूसरा क्वेश्चन था whether the approval of Reserve Bank of India is required. The answer is no. RBI approval is not necessary for needy company as RBI has specifically exempted this category of NBFC in India. तो needy company के लिए RBI का रूल नहीं चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या था. Whether needy company is allowed to raise funds through the issue of equity shares and preference shares. Okay. तो हम रूल 6 के हिसाब से बोल सकते हैं. रूल 6 ऑफ needy company rules. No needy company shall issue preference shares, debentures or any other instruments by the name in the form of whatsoever. तो आप पब्लिक फंडिंग रेज करने की बात नहीं कर सकते. यू हैव टू रेज पुट योर ओन मनी बट नॉट फ्रॉम द आउटसाइड. एंड वेदर needy company is allowed to carry on the business other than the business of borrowing and lending of its own name. ये तो निधि का मेन बिजनेस है ना. तो ठीक है, चलो आंसर में आप लिख देते हो. एज पर रूल 6 नो निधि कंपनी शैल कैरी ऑन अ बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ बोरिंग एंड लेंडिंग इन दिस ओन नेम. तो दैट्स हाउ सिंपली एक एक पॉइंट का आंसर आप लिखते सर. याद रखना, जब वापस से मैं बोलता हूँ, जब भी एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, प्रेफरेबली सारे क्वेश्चन का आंसर राइट लिखने जरूरी है, क्योंकि आपका एक भी आंसर रॉन्ग होता है, प्लीज याद रखना, एग्रीगेट मार्किंग स्कीम में आपके आंसर्स अफेक्ट हो जाते हैं. रॉन्ग अगर एक ही टॉपिक के ऊपर है, रॉन्ग अफेक्ट करता है. ओके, हाँ, मल्टीपल टॉपिक में अलग अलग क्वेश्चन होता है तो मैं समझता हर क्वेश्चन का इंडिविजुअल मार्किंग होता है, लेकिन एक टॉपिक पे सब क्वेश्चंस की तरह पे आएगा तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना. ओके, now what are the features of SPICE plus 32 form? INC 32 का features पूछा गया, सिंपल था. The maximum details of the subscribers, that is 7, and in case of more subscriber physically signed MOA AOA can be attached. So one of the feature was subscriber details. The maximum detail of the directors was 20 कर दिया गया है, that you can give, and the maximum 3 directors can be allowed to filing an application of the DIN. Okay, then the person can apply
the name also in this form, तो आपको name application भी एक ही form में हो गया है. Then affixing DSC of the subscriber INC 32 33 MOA and date of signing will be appear automatically in this form, ये भी बोल दिया गया है. Applying PAN 10 will be compulsory for all the fresh incorporation application and it has to be filed with the new version of SPICE forms. ओके तो स्पाइस 32 के क्या क्या फीचर्स है जितने याद आते हैं नेम एप्लीकेशन डायरेक्टर एमओए ये सब चीजें लिखते जाओ and the company can apply for the application of goods and service tax identification number, employee state insurance corporation number plus employees provident fund organization register, profession tax registration and opening of a bank account in the agile form agile pro itself. So आप ये सारे फीचर्स साथ में लिख सकते हो. And in case the company is incorporated with effect from 26 January 2018 onwards, the nominal capital is less than or equal to 15 lakhs or in respect of company not having a share capital whose number of members stated in the articles does not exceed 20 shall not be SPICE 32 INC 32 will not be applicable. तो आप easily कंपनी को incorporate कर सकते हो. तो ये सारे main features आप SPICE 32 के बारे में बता सकते थे. Point wise answer simply words में लिखा जा सकता था. Okay? क्लियर तो अपने अपने आंसर्स आप लोगों ने लिखे हैं मार्क्स मिले हैं एंड यू मस्ट हैव सीन दैट. चलो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. State any 6 powers which are prudent and to be included in the object clause of the memorandum of association and as a general and ancillary. So कौन से 6 clause include करने चाहिए जो एक suitable memorandum of association में होने चाहिए. ओके जो आपके memorandum of association या business को growth दे सके. The following powers has been held not to be implied and it is therefore prudent to include expressly in the object clause of the memorandum. तो कुछ चीजें आप मेमोरेंडम में इंक्लूड कर सकते हैं जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में मदद करे. क्या क्या चीजें? एक्वायरिंग एनी बिजनेस सिमिलर टू द कंपनीज ओन बिजनेस, बिजनेस ग्रोथ करेगा. Entering into an agreement with the other person or company for carrying on the business of partnership or for sharing joint venture or other arrangement, business grow करेगा. Very clear powers are necessary to justify. That is JV agreement या shareholders agreement या partnership venture agreement भी बना सकते हो. Taking shares into other companies having a similar objects ताकि हम लोग expansion की तरफ जा सके. Taking shares into other companies where the investment authorizes of doing directly or indirectly which will not be improvised if done. तो अगर मैं मेरी कंपनी का कोई भी मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज वायलेट नहीं करता तो मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ ताकि मेरा बिजनेस ग्रो हो. Okay, that you can do. Promoting any other companies or legally helping financially, yes, you can do that. Power to sell and dispose of whole of the company's undertaking, that's also you can do that. And power to use the funds for the political purposes, that's also can be done. See, ये सब business grow करने के हिसाब से MOA, AOA में क्या आना चाहिए वो सब चीजें हैं. And the power to give gifts and make the donations and contribution for charities not relating to the object stated in memorandum and acting as a surety or a guarantor. So these are certain things that you can include in the memorandum of association to make the business grow. तो some 6 बोले थे हमने तो 9 डिस्कस कर लिए. तो 6 ऐसे prudent clauses जो memorandum में डाल सको जिससे आपका business flourish कर सके उस नेचर में. इसलिए याद रखना सेटिंग अप अ बिजनेस में जब भी आंसर लिख रहे हो बिजनेस सोच के आंसर लिखना rather than लॉ के ऊपर. थोड़ा बिजनेस पे ध्यान रखना. इसलिए मॉड्यूल को ध्यान रखना कि बिजनेस सेंस में क्या आंसर दिए गए हैं और लॉ सेंस में क्या आंसर. इसलिए मैं बोल रहा हूँ टॉपिक पढ़ने के बाद ये सोचो कि इसके ऊपर मेरा आंसर क्या होगा. ठीक है, फाइन. क्वेश्चन 3B था. Draft a board resolution for increasing the authorized capital of the company from an existing 50 lakhs divided in 5 lakhs equity shares of 10 each to 75 lakhs divided in 7 lakhs 50,000 share by creation of additional 2 lakh 50,000 equity and state how the capital clause of the memorandum will appear. Board resolution 100% students ने छोड़ा है, नहीं आता. फाइन. चलो ऐसा बोर्ड रेजोल्यूशन लिखना है. आधे से ज्यादा काम तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपको तो सिर्फ बस फ्रेम करने लिखा था. कुछ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था लेकिन वो अटेम्प्ट भी किसी काम का नहीं था क्योंकि कुछ भी लिख के आने से अच्छा कुछ नहीं लिखा है ऐसा लिखा हुआ. ठीक है चलो अच्छा है, अटेम्प्ट करने से आप कम से कम सीख पा रहे हो कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो रही है. चलो रिजॉल्व दैट करके स्टार्ट होता है. इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल. तो रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61 and 64 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, including any amendment made thereto or reenactment, and the rules which is framed thereunder, the consent of the Board of Directors of the company be and hereby accorded to the approval of the shareholders, subject to the approval of the shareholder in the general meeting. याद रखना board resolution पास करना है general meeting का नहीं. तो subject to the approval of the shareholders in the general meeting to increase the authorized capital of the company. फिर question से ही लेना था from 50 lakhs divided into 5 lakh equity shares of rupees 10 each to 75 lakhs divided into 7 lakh 50,000 equity shares of 10 each by creation of additional so and so
अब आया इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैंकिंग परी पास इन ऑल रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये आपका रेजोल्यूशन है। अब मेमोरेंडम में क्या आएगा, तो यही प्रोविजन मेमोरेंडम में दिखेगा। तो मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज में ऐसा दिखेगा, रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13, 61 and 64 other applicable provisions and the rules framed thereunder, the consent of the board of directors being hereby accorded subject to the approval of the shareholders at the meeting for substituting clause 5। मेमोरेंडम में याद है ना, वन नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, याद है कि नहीं? इसमें से फिफ्थ क्लॉज कैपिटल क्लॉज होता है, तो क्लॉज 5। और क्लॉज 5 कैसे दिखेगा? क्लॉज 5 में लिखना था वही सेम पॉइंट, 75 lakhs डिवाइडेड इनटू सो एंड सो ऑफ द फेस वैल्यू। आपको लेटेस्ट जो होता है वो, बाकी 50 lakhs एडिशन वो सब नहीं लिखना, वो सिर्फ रेजोल्यूशन के पास में आता है। क्लॉज 5 में एग्जिस्टिंग ऑथराइज कैपिटल आता है, एज यू कैन सी। ओके, क्वेश्चन 4A था। क्वेश्चन 4A टिपिकली होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी के बारे में था। क्या लिखना था, क्या लिख के आए हैं, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन 4A काफी इंटरेस्टिंग था। ओके, क्या चीजें का ध्यान रखना था? देखो, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 20 crores कंसिस्टिंग ऑफ 150,000 fully paid equity shares and 50 lakhs cumulative preference shares of 10 each। पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो अपनी कंपनी है, पीके इंडिया कैपिटल लिमिटेड ना, एक वर्ड का ध्यान रखना, ये कैपिटल लिमिटेड है। ओके, एंड पीके इंडिया टेली सर्विसेज लिमिटेड ये दूसरी है। तो ये दो अलग अलग है, जबकि ये जो कंपनी की बात कर रहे थे हम, पीके, दैट इज पीके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सो पीके इंडिया के अंदर दे आर होल्डिंग 55 lakhs and 25 lakhs equity shares in PK India Limited। Now PK India Capital Limited and PK India Teleservices are subsidiaries of Lord Krishna Private Limited। Referring the provision of Companies Act, examine whether PK India Private Limited is a subsidiary of Lord Krishna। Would your answer differ if Lord Krishna has 5 out of 7 directors of the Lord Krishna? Okay, तो आपको होल्डिंग और सब्सिडरी का को रिलेशन समझाना था। अगर हम लोग इस तरीके से समझे, तो केस कुछ ऐसा था कि लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, जिसके दो सब्सिडरी थी, पीके कैपिटल वाला, पीके टेली सर्विसेज। पीके कैपिटल 55 lakhs यहाँ पे होल्ड करता है, ओके, और पीके टेली सर्विसेज 25 lakhs यहाँ पे होल्ड करता है। तो नियरली 55 प्लस 25 कितना हुआ? 80। ओके, so 80 lakhs shares की holding है out of 150 lakhs। That clearly implies what kind of relationship do they have। तो एक पेंसिल लेने का, हमेशा एक डायग्राम जैसा छोटा कुछ बना लेने का, आप ये तो आंसर में भी बना सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग योर आंसर्स। ठीक है, तो एक आइडिया मिल जाता है कि अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कौन है, सब सब्सिडरीज कौन है, और असल में अपने को क्वेश्चन किस कंपनी के बारे में पूछा है। ठीक है, सो आफ्टर मेकिंग दैट नाउ वी आर गोइंग बैक टू द आंसर। तो आंसर लिखने का तरीका क्या था? हम पहले होल्डिंग कंपनी के कोरिलेशन में लॉ समझाते थे। So as per section 2 subsection 87, subsidiary company means a company in which the other company, that is the holding company, controls the composition of the board of directors or exercises control of more than one half of the voting powers either in its own name or together with the other subsidiary। तो हमने समझा कि होल्डिंग सब्सिडियरी का को रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से वो लॉ एक्सरसाइज होता है। क्लियर? ये बात समझाने के बाद अब हम लोग आगे समझाते हैं। The meaning of the phrase total voting powers has been defined in section 2 subsection 89 of the Companies Act, which says that total voting power in relation to any other matter means the total number of votes which can be cast in regard to a matter on a poll at a meeting of a company if all the members thereof or their proxies have the right to vote on that matter are present at the meeting। तो वोटिंग पावर क्या होता है? तो टोटल वोटिंग पावर का मतलब ये होता है कि सारे वोट्स उस टाइम पे कास्ट किए जा सके। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स दैट यू कैन कास्ट इन अ पर्टिकुलर मीटिंग, दैट्स कॉल्ड टोटल वोटिंग पावर। Now total equity share capital of PK India Private Limited was 1500 lakhs। बराबर। In the absence of any specific condition in the problem, it may be presumed that all equity shares carry equal voting rights। Unless उन्होंने differential voting rights दिया, हम ये presume कर सकते हैं। Now PK India holds, PK Capital वाला holds 550 lakhs and PK India, and PK Teleservices hold 250 lakhs in PK India। So ऐसा बोल सकते हैं कि therefore PK India Private Limited and Capital वाला, that is PK Capital and Teleservices, both are the subsidiaries of Lord Krishna as per the given facts। So it is clear that PK India Capital Limited and PK India Teleservices are collectively holding 800 lakhs के equity shares, which clearly implies is a major shareholding। Thus, in view of section 2 subsection 87 clause 2, it can be said that Lord Krishna exercises control of more than half of the total voting powers of PK India Limited। बराबर।
yeah, together with its subsidiary that is Capital Limited and Teleservice Limited. बराबर. So accordingly, PK India Limited shall be indirectly a subsidiary of Lord Krishna. ये देखो, ये आपका आंसर बनाने का तरीका, पहले आपने लॉ समझाया, फिर कैसे कोरिलेशन में कनेक्ट किया और समझा दिया. Even if the Lord Krishna would have the right to appoint 5 directors out of 7 directors, the answer would remain same. However, under the circumstances, PK India becomes a direct subsidiary of Lord Krishna as per the provisions of 2 subsection 80 subsection 1. मतलब इस situation में अगर 5 directors हो जाएंगे through the controlling composition, इस situation में अगर बात करें तो they will become a direct subsidiary अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंटमेंट थ्रू द कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गया तो क्लियर. अगर डायरेक्ट बोर्ड पे कंट्रोल हो जाता तो एक तरह से डायरेक्ट सब्सिडरी हो जाती. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग अ इनडायरेक्ट सब्सिडरी. ओके, लेकिन ऊपर वाले सिचुएशन में शेयर होल्डिंग पैटर्न इनडायरेक्टली होल्ड कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट सब्सिडरी की कोरिलेशन आया समझ में. सिंपल आंसर था, बस थोड़ा डायग्राम बना के समझना था कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है. ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन 4 भी. In a government company, who appoints the auditor and to whom the auditor reports is submitted and explain the supplementary audit report. Clear? तो यहाँ पे who appoints the auditor? CAG. किसको देते हैं? CAG. सप्लीमेंट्री ऑडिट कुछ लोग मिस कर गए. ये स्पेशल ऑडिट होता है जो CAG कॉल करता है अगर उसको जरूरत पड़ती है तो. ठीक है, तो in case of a government company, the controller and the auditor general shall appoint the auditor and direct such auditor in the manner in which the accounts of the company is required to be audited. Accordingly, the auditor shall submit the copy of the report to C and AG, which shall be including all the directions, if any, issued by the C and AG and the action taken thereon and its impact on the accounts in the financial system. तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट भी सी एंड एजी को देता है, उसका अपॉइंटमेंट भी सी एंड एजी करता है. क्लियर? तो ये बात आपने समझा दी. अब सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है? तो सी एंड एजी विद इन 60 days of the receipt of the auditor report, he has a right to conduct a supplementary audit of the company's account by himself or appointing a person as he may authorize for the purpose of such audit and require an information or additional information to be furnished to any person or persons so authorized on such matters by such person or person in such form as CAG में डाले. तो CAG को लगता है नहीं ये पॉइंट बराबर से हाईलाइट नहीं किया गया या ये चीज बराबर से नहीं, तो एक ये पॉइंट के लिए उसने तो इस स्पेसिफिक चीज के लिए CAG वापस से अपना ऑडिट कर सकता है, वो बोलते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट. And comment on the audit report or supplementary audit report, the company shall send a copy of the CAG report to every member and any other person entitled under section 136 and also the same be placed in the AGM of the company at same time and same manner as the audit report. So supplementary audit report का पार्ट ही होती है और सबको सारे members को भेजा जाता है. Clear? So आपने ये समझा दिया कैसे, मतलब I believe now you're getting the point. ऑडिट के बारे में बराबर लिख पाए थे, सप्लीमेंट्री ऑडिट कुछ लोग मिस कर गए, कुछ लोग वो याद था. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल थे, बस मैनेज करना था. As a practicing CS, advise your client regarding the annual compliance of LLP. I would say कंपनी लॉ हर जगह नहीं डाल देने का, तो ये LLP के बारे में था, थोड़ा बहुत हिंट था आंसर्स में, लेकिन हाँ काफी स्टूडेंट्स ने अच्छे से आंसर लिखा, पूरा आंसर लिखा. पर जो लोग मिस कर गए प्लीज याद रखो, हम लोग मल्टी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं, इसलिए अलग अलग प्रोसीजर्स एंड प्रोविजंस आपको याद रखने हैं. So chalo, all LLPs which are registered under the LLP Act, they need to file annual returns and the statement of accounts every financial year. It is mandatory for the annual P to file irrespective of whether it has done any business or not. So 3 mandatory compliance kya hai? Filing of annual returns. Annual returns are filed in form number 11. This form is summary of the management of the affairs of the company, as such the number of partners and their names. Form 11 needs to be filed within 60 days of the closure of the financial year. Hence, the annual return should be filed before the 30th May every year. Okay. In case the annual turnover of the LLP crosses 5 crores or the capital contribution exceeds 50 lakhs, the annual return has to be accompanied by a certificate from the practicing company secretary. बस ये हो गया annual return के बारे में. Next, the statement of accounts and financial statement. All LLPs are required to maintain their books of accounts in the double entry system. They need to prepare a statement of solvency every year by 31st March. For this purpose, Form 8 should be filed with the Register of Companies on or before 30th of October every year. It should be noted that LLP whose annual turnover exceeds 40 lakhs or contribution 25 lakhs is required to get their accounts audited by a qualified chartered accountant mandatorily. And the penalty for non-filing of these form in ROC is 100 rupees every day for the number of days a form continues. और लास्ट में इनकम टैक्स, तो एक आपने एनुअल फाइलिंग, एक आपने ROC फाइलिंग और एक इनकम टैक्स, तीन ही तो बताने थे.
Every LLP is required to close the financial year on 31st March every year as per the income tax and required to file the returns with the income tax department. The LLP whose annual accounts turnover exceeds 40 lakhs and the capital contribution 20 lakhs are required to get their accounts audited as per the provisions, okay, irrespective of the annual turnover. However, it is mandatory for the LLP to file the returns electronically under the digital signature if their accounts are required to be audited under section 44AB of the Income Tax Act. तो ये आपने समझा दिया कि किस तरीके से रिटर्न्स फाइल होने चाहिए थे. Clear? Now narrate the disadvantages of LLP. मैंने एडवांटेजेस पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स कई बार क्लास में पूछे तो कई लोग इसका आंसर दे पाते हैं, लेकिन जब मैं डिसएडवांटेज पे आता हूँ तो कई लोग सोच में बढ़ जाते हैं एलएलपी का क्या डिसएडवांटेज है, और वो उनके आंसर्स में साफ साफ रिफ्लेक्ट होता है कि वो सोच सोच के आंसर लिख रहे हैं. इसका मतलब अभी भी वो प्रिपरेशन में उतने रेडी नहीं थे कि एलएलपी के डिसएडवांटेज के पॉइंट्स याद करके रखें. बिकॉज क्या है ना, डिसएडवांटेज या कैरेक्टरिस्टिक कॉमनली पूछे जाते हैं, सर डिसएडवांटेज कौन पूछता है. ठीक है, तो डिसएडवांटेज रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल एक्सेस टू मार्केट. तो पॉइंट्स को याद रखना. LLP are small form of business and cannot get its share listed on the stock exchange through initial public offering. With this restriction, LLP may find difficult to attract the outsiders investors. So that is one of the disadvantages. Rights of the partner. LLP can be structured in such a way that one of the partner has more rights than compared to another. So it isn't one vote per share system. So some lesser partner may feel compromised if the higher shareholders choose to move the business in the direction that they want to. Okay. Another disadvantage is public disclosure of LLP information. LLP must file annual returns financial statement with the registrar of LLP annually, which becomes a public document once filed with our registrar of LLPs. Okay, and can be inspected by general public, including that of the competitors, by paying some of the fees to the LLP registrar. So information disclosure can make an entity competitively disadvantaged, and competitors, especially those not required to disclose the documents, can access the information and improve their own business. So that's one has to be careful about. LLP, that is limitation formation of LLP. LLP cannot be formed by a single person. Okay, non-resident Indian and a foreign national willing to form an LLP in India must have one person resident in India to be a designated partner. Further, FDI in LLP is allowed only through the government route only, and that too in those sectors where 100% FDI is allowed under the automatic route. And there is a limitation to make the LLP unattractive in the form of business. Okay, so these kind of disadvantage you can narrate in LLP. And then offenses. Limited liability partnership provides for non-compliance on the procedural matters such as delay in filing e-forms. One has to pay the default fees for every day for which default continues. Such default fee would be payable at the rate of 100 rupees after the expiry of the date of filing of the period through 365 days or 300 days. So the offense result in through a payment of fine or through the payment of fine as well as imprisonment. तो अगर आपके ऊपर इतनी सारी liability डाली जा रही तो you feel like नहीं यार ये गलत हो रहा है. And the exit options are not easy for LLP. LLP को बंद करना भी इतना आसान नहीं है. LLP was defaulted in filing the statement of accounts and annual returns. Willing to shut down the operations and wind up will have to make its default good first before filing the e-forms on late filing fees. तो आपको आरओसी या बाकी सब की पहले फीस पे करनी पड़ेगी, फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, फिर आप बंद कर सकते हो. So this provision is making LLP an unattractive form of business in India, and there are many businesses that are ignorant about the compliances also. Okay, and limitation in ECB. Limited liability are not allowed to raise ECB. Therefore, LLP cannot avail the commercial loan from the foreign entities, FIs, foreign banks, and financial institutions outside India. So these are some of the disadvantages. सारे याद नहीं रहे चलेगा, लेकिन कुछ तो याद रहे थे. जिन्होंने याद करके लिखा था उनको सुटेबल मार्क्स दिए गए हैं, पर जिनको आता ही नहीं था वो लोग सोच सोच के अपने अपने डिसएडवांटेज क्रिएट किए जा रहे थे. तो बेटर रीड इट आउट, एग्जाम में याद रखना. ठीक है, कि हमेशा एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक नहीं, डिसएडवांटेज भी पढ़ के जाया करो. ठीक है. Next form of question was multi-cooperative society का. That is, Pratik has studied mass farming and keen in uniting the farmers in various states and forming a multi-state cooperative society. Brief Pratik on the documentary requirements for the formation of the multi-state cooperative and the authority to be given. यहाँ पे मैंने देखा कई स्टूडेंट्स थोड़े फंबल कर गए, यहाँ तक कि लिखे ही नहीं थे आंसर्स. ओके, मतलब जरा सा डाइवर्जन आ रहा है और स्टूडेंट्स थोड़े थोड़े वीक होते जा रहे हैं. मतलब ये की जगह पे वो पूछ लो तो दे स्टार्ट थिंकिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए था.
So application has to be in form number 1 as per the multi-state cooperative society rules, should be filed with the central registrar of the cooperative societies. और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक स्टेटिंग द क्रेडिट बैलेंस इन द फेवर ऑफ द प्रपोज्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है, द स्कीम एक्सप्लेनिंग how the proposed multi-state cooperative society has reasonable prospect of becoming a viable unit. 4 copies of the bylaws has to be given. Proposed area of operation for registration and two contiguous states only. And then a list of at least 50 members from each state has to be submitted, and a list has to be submitted in the format annexed by the Multi-State Cooperative Societies Act along with the proof ID of the members. So कौन-कौन से members है, कितने state में कितने members है, सारे list देनी पड़ेगी. Certified copy of the resolution which has been passed by the proposed society along with the certified copy of the resolution of the promoters which shall specify the name and address of one of the applicants whom the central registrar may address in correspondence. तो किससे बातचीत होगी, किससे correspondence होगा, किससे deal होगा, तो promoters और certifying authority का नाम देना जरूरी है for any kind of registration and dispatch of the registration documents, and contact number and email ID of the chief promoter of the society. तो है वो काफी हद तक कंपनी लॉ के जैसा है, लेकिन प्लीज याद रखिए इसमें काफी सारी चीजें अलग भी हैं, जैसे सर्टिफिकेट्स होता है, स्टेट वाइज नॉर्म्स होते हैं, आपको बाइलॉज बना के देने हैं, फिर उसके साथ साथ ऑपरेशनल कैसे रिक्वायरमेंट होगी, कौन से स्टेट में क्या ऑपरेशंस होंगे, प्रूफ आईडी देनी है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास बाकी सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करनी है. ओके, ये सारी चीजें ध्यान रखिए. क्लियर. और अब आते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज पे. तो सोसाइटी हैविंग ऑब्जेक्ट रिलेटिंग टू थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट फॉर मल्टी society following additional documents will be required. No objection certificate from the Register of Cooperative Society of the state. So अगर आपके पास अलग सा ऑब्जेक्ट है, एक अलग समथिंग लाइक जहाँ पे आप क्रेडिट भी देने वाले सामने वाले को या एक तरह का लेंडिंग भी करने वाले, तो वहाँ पे ये चीज है कि आपको एनओसी चाहिए फ्रॉम द रजिस्ट्रार एंड द सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट दैट द क्रेडेंशियल ऑफ द चीफ promoter have been verified by the Register of Cooperative Society, and all documents required to be submitted in original along with the signatures. ओके, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी तब जाके एक सोसाइटी बनती है. इसलिए मैं बोला कई स्टूडेंट्स छोड़ के आए थे, कई स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे, फंबल कर रहे थे, क्या लिखें. ठीक है. एंड लास्टली, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पूछा था. ओके, चलो देख लेते हैं. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इट इज गवर्न बाय हिंदू लॉ. So the business of a joint Hindu family is controlled and managed under the Hindu law. There are 2 schools, Dayabaga school and Mitaksha school. बस इतना बताना था. Secondly, management के बारे में लिख सकते थे. All the affairs of the joint in the family business are controlled and managed by one person known as Karta or a manager. The Karta is the senior most male member of the family. He works in consultation with the other members of the family, but ultimately he has the final say. The members of the family have full faith and confidence in Karta. Only the Karta is entitled to deal with outsiders, but the other members can deal with the outsider only with respect with the permission of the Karta. Third point में आप बता सकते थे membership by birth. Yes, that is a business चल रहा है ना. So membership of the family can be acquired only by birth. As soon as a male child is born in the family, he becomes a member. Membership requires no consent or any kind of agreement. Liability की बात करें, except the Karta, the liability of other members limited to the shares in the business. Karta is not only liable to the extent of his share in the business, but his separate property is equally attachable and the amount of debt can be recovered from the separate property also. फिर बात करें permanent existence की, the death, lunacy or insolvency of any member of the family does not affect the existence of the business. Implied authority की बात करें, joint in the family, only Karta has the implied authority to contract debts and pledge and credit the property of the firm for the ordinary business purpose. Minor become a partner, so in partnership, minor cannot become a co-partner and cannot be admitted, but can be admitted only for the benefit. But in joint in the family, the minor is a partner himself. And dissolution की बात करें तो joint in the family business can be resolved only with the will of the members of the family. Any single member has no right to get the business resolved. तो 8 पॉइंट दिए थे, कम से कम 5-6 तो लिख ही सकते हो, और लिखे भी थे. तो ओके, गुड. सो अब ये समझ में आया पूरा आंसर कैसे लिखना था. याद रखना, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में मल्टी फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं. फर्स्ट टू 6 चैप्टर्स हमने लिए थे, अलग अलग फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं. तो यहाँ पे आपको याद रखना है किसके कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके एडवांटेज, किसके डिसएडवांटेज, अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस, एडवाइस क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे याद रखना और अच्छे से लिख के आना पेपर. क्लियर. इसके साथ साथ आप ये चीजों का भी ध्यान रख सकते हो कि कुछ भी उल्टा सीधा मत लिखो अपने मन मर्जी से, थोड़ा बहुत रीडिंग के ऊपर ध्यान दो.
ओके और जैसे मैंने बताया था 3 दिसंबर से जून 2021 के बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो जिसको भी कांटेक्ट करना है 8283848516 पे कांटेक्ट कर सकता है एंड वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। ओके, गुड बाय एंड गुड लक।